Our lead story on India Global this week. Well, the Pakistan polls have been a tale of comebacks, a kingmaker and the prisoner who was once the kaptaan of Pakistani politics. Well, more than a week after the high-voltage Pakistan elections, the full results are still not declared. But in an unexpected twist to the election drama, Nawaz Sharif has named his brother Shehbaaz Sharif as his party's PM candidate. Sharif Jr., who served as Pakistan's Prime Minister and led the PMLN during Nawaz's years of exile, is set to don the Sherwani again. This time, in alliance with once the PMLN's biggest rival party, Bhutto Zardari's PPP, or Pakistan's People's Party. Well, many say Imran Khan's party has emerged as a real winner, with 93 candidates backed by the PTI coming out on the top. The PTI has also named a PM candidate, with Imran Khan reaching out to the US for intervention. This election for many represents the changing face of Pakistani politics, with the military script gone awry this time. What is the latest from Pakistan? Well, take a look at this report. हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे. Exactly 1 week on, Pakistan has a coalition in place but no Prime Minister yet. Will Sharif Jr. replace Nawaz, or will there be another twist in the tale? Imran Khan's PTI has announced its prime ministerial candidate as well. Remember, PTI-backed independents bagged 93 seats short of a majority. There have been several defections too since the results. PTI joined hands with Majlis Wahdat-e-Muslimin, cobbled together a coalition at the centre and in Punjab. In Khyber Pakhtunkhwa, they joined hands with Jamaat-e-Islami. In his victory speech, even before all the results were announced, Nawaz Sharif had reached out to Bhutto's PPP and the MQM. Ultimately, the Pakistan Muslim League Nawaz nominated Shehbaaz Sharif for the top post. Bhutto Zardari is supporting the government from outside. Sharif's daughter, Maryam Nawaz, became PMLN's chief ministerial candidate for Punjab, one of the most important states in the country. We were not going to put ourselves forward for that position, but we will support a political party without becoming part of the government. It'll be my effort within Parliament, as I don't have a mandate to form my own government, to fight for political stability. Final poll results have still not been announced. Imran Khan, who's in jail, has reached out to the US to protect democracy. The West too is expressing concern over the delay after allegations of rigging. We're concerned, and we share concerns about some of the reports that we've heard coming out of Pakistan in terms of intimidation, voter suppression, that kind of thing. And so we're watching this very, very closely. And as I understand it, votes are still being tallied. While in most of Islamabad's elections, the army's influence decides its next leader, it seems the pull of democracy has trumped the men in khaki this time around. The big question on everyone's mind: will the latest government formation in Pakistan ensure stability? With Disha Bagchi, NDTV Bureau Report. Joining me on the broadcast this week, well, I'm being joined by Ishan Ahmed Khan, spokesperson of the PMLN. Also with me, Taj Haider, this General Secretary of Pakistan's People's Party. Also with me, Qamar Chima, who's a strategic and political analyst, and Qaisar Mumtaz, advocate and leader, and also a senior leader of the Pakistan Tehreek-e-Insaf, is with us as well. Thanks very much, gentlemen, for being with us on India Global this week. Ishan Ahmed Khan, going across to you first. So, well, Shehbaaz Sharif poised to return as a Prime Minister of Pakistan. Do you think you've let some people or a chunk of population of Pakistan down with this decision, with Nawaz Sharif not returning as a Prime Minister? What was really the strategy behind, Shehbaaz Sharif's nomination as a PM candidate? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. दूसरी बात यह है कि हम डाउन स्टेप नहीं हुए. हमारा नारा ये है इस वक्त कि सियासत नहीं, रियासत बचाओ. जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क में है, जिस तरीके से हमारा इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से कैंडिडेट मुख्तलिफ पार्टीज के बन करके आए, वो अच्छी बात है. देखें, जिनको लोगों ने वोट दिया, जिनको सपोर्ट किया, वो जमातें आगे आए.
तो दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क में माहौल बड़ा गर्म है, वाकई बहुत गर्मा गर्म माहौल है। इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून की, और पंजाब में हुकूमत बनने जा रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला बनने जा रही है हमारी। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा सेटअप है। एक बात ये बताएं कि जो पाकिस्तान की आवाम का जो कहीं ना कहीं मैंडेट था, बहुत लोग ये कहेंगे वो नवाज शरीफ के लिए था, तो आपने शहबाज शरीफ को पीएम कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेट करके, क्या आपको लगता है कि आवाम इससे लेट डाउन होगी पाकिस्तान की? नहीं, देखिए पार्टी हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। वो जो हुक्म करेंगे, वो जिसको चाहे वजीर आजम नॉमिनेट कर सकते हैं, वो जिसको चाहे पार्टी के सरबराह है। उसमें देखें, मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे पहले भी वजीर आजम रह चुके हैं, वजीर आला भी रहे, और वो बड़े अच्छे काम करते हैं। अगर वो वजीर आला बन जाए तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे कायद मोहतरम जो हुक्म करते हैं, और वाकई कायद के नीचे हम खड़े होते हैं और उनके हर हुक्म को बजा लाना हमारा फर्ज बनता है, और वो पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कुछ जबरदस्ती नहीं बन रहे। और दूसरी बात यह है, मियां शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे लीडर हैं। Let me get in Taj Haider of the Pakistan People's Party on this. Haider Sahab, what would you say to those who say that this is perhaps against the people's mandate, and military oversight could not work this time because the people voted overwhelmingly for the independence backed by the Pakistan Tehreek-e-Insaf? And many who would also say that Bilawal Bhutto's decision to ally with an erstwhile rival is something which really goes against the grain of your party. Now, three parties emerged as major vote gainers. One party was ours, another was Muslim League, and the third party was independents backed by Tehreek-e-Insaf. And as a political party, our first priority was to make a stable government and to control the political instability which existed then. So PMLN came to us and they offered to make a government. Tehreek-e-Insaf refused flatly to talk to us. So our only option was to support Pakistan Muslim League and make a government so that this crisis, the political stability, should come to an end. That phase is now over, and now the next phase is how to run the government. And we are having negotiations with Pakistan Muslim League, and today was the third day in which we are asking them to accept some points of our economic agenda, which are people-centric and which provide a solution to the problems which the poorest in Pakistan are facing. A coalition or an alliance, even though it was with an erstwhile rival, it was important keeping in mind the instability in Pakistan. So there's an interesting argument there. Let me go back to Mr. Kaisar Mumtaz of the PTI. Mumtaz Sahab, if you can hear me now, आप क्या बोलेंगे? Do you accept the people's mandate now, या आप अभी भी कहेंगे कि रिगिंग थी इलेक्शन में? क्योंकि आपके ओपोनेंट्स ये बोलेंगे कि जिन जगहों पर, जिन प्रोविंसेस में पीटीआई को मैंडेट मिला है, वहां तो आप रिगिंग नहीं कह रहे हैं, जिन प्रोविंसेस में पीटीआई के अगेंस्ट मैंडेट है, वहां पर आप रिगिंग कह रहे हैं। या का नाबुदु व या का नस्तईन, मैं बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। कायद मोहतरम इमरान खान को अवाम ने बहुत भारी मैंडेट दिया और 2/3 अक्सरियत से कामयाब करवाया। जब इन्होंने देखा कि इमरान खान को अवाम ने वोट दे दिया है, तो इन्होंने रातों रात जो है वो रिजल्ट चेंज कर दिए। जो 45 फॉर्म हैं वो उम्मीदवारों के पास है, और वो उम्मीदवार जो हैं वो जीत गए हैं, उनको हरवाया गया है टारगेट करके हल्कों में। और ये कौन सा, ये इनकी बात कर रहे हैं कि इनके पास अक्सरियत है। अक्सरियती पार्टी तो वही है जो अभी भी, तो हमारी 80 से 85 सीटें जो है वो इन्होंने छीन ली हैं, जो हम इंशाल्लाह वापस लेंगे। और ये कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी इस गवर्नमेंट की। नवाज शरीफ क्यों भागा है? बात कर रहे हैं वो जो कहते हैं कि जी हमारा कायद, वो क्या कायद? वो कायद तो भाग गया। आपका कायद आया, हम आपका मुकाबला करने के लिए बैठे हैं पाकिस्तान में। देखते Okay, let me get Irshan Ahmed to respond to that, and then I'll go back to Kamarchin. Irshan साहब, go ahead, बोलिए।
कि ये लोग पीटीआई ये चाहती है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तमाम जमातें मिलकर के हुकूमत बनाएंगे, मुमताज साहब आपके पास में वापस आऊंगा। हम इनको ये समझाना चाहते हैं पीटीआई को मैं ये समझाना चाहता हूँ मेरे भाई को कि आओ मिलकर के पाकिस्तान को मजबूत करें। मैं ये कहूंगा कि आओ मिलकर के पाकिस्तान को मजबूत करें, आओ मिलकर के पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें, ना कि ऐसा करें जैसा आपने करें। आप इस बात पे क्या कहेंगे कि पीटीआई को कहीं ना कहीं पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस को आवाम ने मैंडेट तो दिया है भाई, 93 इंडिपेंडेंट्स बैक्ड बाय इमरान खान केम आउट ऑन द टॉप। डिड यू एंटिसिपेट कि आपने सोचा था कि इतने इंडिपेंडेंट्स बैक्ड बाय इमरान खान एंड हिज पार्टी वुड विन? मालूम था, कोई इसमें कुछ दूसरी राय नहीं है कि इनकी पॉपुलर पार्टी है, उनको नौजवानों की अक्सरियत हासिल है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा ये चाहते हैं कि नौजवानों को मजीद वर्गला के खान साहब को बोलने देना, आपके पास वापस आऊंगा। इदारों पे हमला करवा दें, शुहदा की कब्रों पे हमला करवा दें। अब ऐसा ये कर नहीं सकेंगे क्योंकि पहले इनको बिल्कुल खुली छूट दी गई, पाकिस्तान में इनकी हुकूमत बनाई गई, इन्होंने हुकूमत बनाई, नो डाउट। But going back to you, Taj Haider, going forward, what is going to be, the primary aim of this coalition government? Because many people have many reservations, because many would say that you've come together just for power. Riyasat ke liye aap saath aaye hain. So, what is going to be the priority of this government now? No, we are not part of the federal cabinet. We have said that since there are questions on the mandate, and there is a lack of legitimacy for both Pakistan Muslim League and MQM. So we are not joining the cabinet as such, but as I said, our first priority was to bring political stability to the country, and country has to have a government. So, Kaisar Mumtaz, आप एक बात से agree करेंगे, that's an important point that you are making there. Kaisar Mumtaz, आप एक बात से agree करेंगे कि आप इमरान खान के रेजीम के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन तो काफी खराब हो गई थी, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, प्राइस राइज हो, जो इकोनॉमी थी पाकिस्तान की, दैट वाज रियली इन अ बैड शेप। और अभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है एक स्टेबल गवर्नमेंट, ताकि वो इकोनॉमिक जो एक क्राइसिस है उससे तो बाहर ला सके एटलीस्ट कंट्री को। ये आपके पास जो आपने फिगर्स बताए ये गलत है। मैं इसको कहता हूँ कि जब इमरान खान की 3.5 साल की गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान में गरीब बहुत खुशहाल था। हमने गरीब की जेब में 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड डाल दिया था, हर बंदा अपना इलाज करा सकता था, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा था। फिर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई और हमें जो है हमारी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। ताज हाजिर हमारे लीडर है पीपल्स पार्टी के, ये अच्छा मौका है आपके पास। उमर अयूब जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, आप तो उस अयूब खान का आप जो है एहसान उतारे, जिसे भुट्टो साहब डैडी कहते थे, तो आप जो है उसको उमर अयूब को वोट दे। और उमर अयूब ने भी कहा है कि मैं हर शख्स को वोट के लिए, वैसे शख्स को वोट न दे तो 16 माह में जो शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की बनाई है। But still, the fact of the matter is that, whether it's Pakistani rupee or other such indices, they were really, sort of down to the dogs, and the economic situation was pretty bad. But thanks very much, gentlemen, for joining us.